विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, ये है आपके आसपास। जानिए वो कैसे जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। सशक्त नारी वही है जो ऑनलाइन भी सुरक्षित है। इस बार कार्यक्रम में करेंगे बात उन साइबर खतरों की जो महिलाओं को निशाना बनाते हैं, उन उपायों की जो हर महिला को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रख सकते हैं। We got a cyber tip line. इसमें information था that somebody was creating CSAM content, that is child sexual exploitative and abusive material. Suspect had sexually assaulting them and then recording the whole thing and उसको store कर रहा था Google Drive में। महिलाओं के अगेन जो शोषण हम देख रहे वो धीरे धीरे एक ऑनलाइन स्पेस, एक डिजिटल स्पेस में भी शिफ्ट होते हमें नजर आ रहा है। और जो भी सस्पेक्ट है किसी सोशल मीडिया हैंडल पर आपके नॉन कंसेंशुअल इमेजरी अगर शेयर किए जा रहे हैं, वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, आप बिना झिझक इसे रिपोर्ट कीजिए। तो देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे विशेष कार्यक्रम नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण, और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों, विश्लेषण और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज की वो 3 बड़ी खबरें जिन पर विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले आज नेशन टू नेशन में बात होगी यूरोप की, जहां की फिजा इस बार बदली सी है। कभी अपने ठंडे मौसम के लिए जाने जाने वाला यूरोप इस बार तापमान के तांडव से त्राहिमाम कर रहा है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, सड़कें पिघल रही हैं और ट्रेन सेवा भी बाधित है। ऐसे में सवाल यह है कि क्यों यूरोप के आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। इस खबर की तह तक हम जाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे पानी पर भारत के पहरे की। जैसे जैसे भारत का शिकंजा कसता जा रहा है, पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही है। पहले धमकी और अब मिन्नत। दुनिया का कोई ऐसा मंच नहीं बचा है जहां पाकिस्तान ने गुहार न लगाई हो, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि आतंक के साथ पानी नहीं बहेगा। इस बार कहां पाकिस्तान को फिर से नाकामी मिली है, यह भी हम आपको बताएंगे इस खबर के जरिए। इसके अलावा बात पाकिस्तान के एक और पड़ोसी की करेंगे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हवाई हमला किया है, वो भी बिना किसी हवाई सेना के। पाकिस्तान के हमलों के बाद तालिबान ने किस तरह से पलटवार किया है, यह भी हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की, और सबसे पहले बात यूरोप की, जहां आसमान से बरसते अंगारों ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। फ्रांस में गर्मी के कारण 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हीट वेव के चलते यूरोप में कई न्यूक्लियर जो पावर प्लांट हैं उनको बंद करना पड़ा है। फ्रांस में गोल्डफिश न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी बंद करना पड़ा, और इसकी वजह यह है कि प्लांट को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गारोन नदी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। फ्रांस ही नहीं, यूरोप के 26 देश हीट वेव की चपेट में हैं। स्पेन, इटली और ब्रिटेन समेत 14 देशों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार और बुधवार को फ्रांस में इतिहास के सबसे गर्म दिन दर्ज किए गए। देश के पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान 39 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने आधिकारिक तौर पर एल नीनो की स्थिति के बनने की बात कही है, जिससे ऑस्ट्रेलिया, एशिया और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में इस वर्ष सामान्य से अधिक गर्म और शुष्क मौसम रहने के आसार है। दरअसल ये जो पूरी स्थिति है, इस पर अब एक नई बहसियत छिड़ गई है कि आखिर इतनी गर्मी की वजह क्या है। यूरोप में जो पारा चढ़ा है उसकी वजह आपको बताते हैं। हीट वेव की चपेट में 26 यूरोपीय देश है। इटली, ब्रिटेन में रेड अलर्ट जारी किया गया है।
साथ ही फ्रांस में गर्मी से 9,000 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, मतलब 9,000 जो है ये आंकड़ा पार कर चुका है मौत का जो है। इसके अलावा फ्रांस में कई परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए गए हैं। गोल्डफिश न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी बंद किया गया। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन में ट्रेन रद्द करना पड़ी हैं। ट्रेन के ऑनबोर्ड सिस्टम गर्मी नहीं झेल पा रहे हैं। फ्रांस में 1,350 से ज्यादा स्कूल जो हैं वो हीट वेव की वजह से बंद किए गए हैं। तो प्रचंड गर्मी की मार से पूरा यूरोप करहा रहा है। फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पब्लिक हेल्थ फ्रांस ने जानकारी दी है कि 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। यह पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। इस दौरान फ्रांस के इतिहास में सबसे अधिक गर्मी पड़ी और देश के कई शहरों और कस्बों में दिन और रात के तापमान के पुराने रिकॉर्ड्स भी टूट गए। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। पेरिस में अंतिम संस्कार सेवाओं से जुड़े लोगों ने कहा है कि उन्हें दफनाने या अंतिम संस्कार से पहले शवों को रखने के लिए जगह ढूंढने में परेशानी हो रही है। मतलब हालात समझिए कि कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इस गर्मी ने यूरोप के कई अन्य हिस्सों में भी अधिकतम तापमान से जुड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से तापमान के तांडव से त्राहिमाम हो रहा है और लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यूरोप के कई देशों में हीट वेव की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन में ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, लोग परेशान हुए हैं। तो ये तापमान के तांडव की स्थिति है। और आइए अब सीधा रुख करेंगे एक प्रेस वार्ता का जो कि एथेनॉल पर आयोजित की जा रही है। मिस वर्तिका शुक्ला, फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, श्री मनप्रीत सिंह बिंद्रा, is it okay now? Shri Manpreet Singh Bindra, Circle Head Sales Urbanite Business, Bajaj Auto Limited. Shri Vikram Gulati, Country Head and Executive Vice President, Toyota Kirloskar Motors. And Mr. Rahul Bharati, Senior Executive Officer, Corporate Affairs, Maruti Suzuki. So we'll begin with, first we will take some opening remarks by some of the experts. Okay. Hello. Is it okay now? Is it okay? हेलो हेलो अरे हेलो हेलो अरे आपको Hello. Now can you hear me now? I think it's better now. Should we go ahead, please? Yeah. Okay. So now I'm inviting Miss Vartika Shukla for her opening remarks. Yeah, thank you, Madam. Very good afternoon to everyone. This discussion and the interaction is on the E20 ethanol blended petrol program. This ethanol blending in petrol has been not done overnight. It is a measured, scientifically driven, step-by-step process.
In 2013 and 14, we were blending about 1.5% ethanol in gasoline. And this program was targeted to have 20% blending, which is E20, which was completed in December 25, 5 years ahead of the target. This program, the ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India, ARAI, and SIAM. And also it is in line with the global best practices which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions. There have been diversification in the sources to produce this ethanol, which has led to the reduction of crude import. And if you have seen the West Asia crisis, which we overcame, some part of the vulnerability was reduced by reduction of crude import equivalent to the 20% gasoline, which was made available to all the customers across the country. So with this, also, you may note that there are some pointers which have been released by the Ministry of Petroleum and Natural Gas, which concern the use of water in the production of ethanol, as also the value of production of ethanol, which goes into blending, plus the capacity of ethanol production in the country. There are several countries across the globe, Canada, US, Brazil, Paraguay, Germany, who have used ethanol in various blends for several years. It is pertinent to note that since E20 ethanol has 80% of gasoline, which is fossil fuel, the main characteristic of the fuel is still fossil-based, which is gasoline. The specifications are well structured in terms of its compliance to BIS standard IS 17021, published in 2018. Again, these standards are a result of a dialogue between various scientific agencies, experts, and extensive testing. And all ethanol gasoline, E20 gasoline, which is spread across the country now in all retail outlets, 77 of them all across the country, have uniformly adopted the specifications, which is compliant to meeting the emission standards for BS6, as well as several other specifications which regulate the engine performance in terms of higher RON, compliant sulfur, and water content, which is compliant to meeting the requirement of engine performance. So this is a summary of the few points of the E20 program of the Government of India, which has now made us less reliant on 100% import of crude towards production of gasoline. Thank you, Vartika ji. Now I request Mr. Vikram Gulati to make some. Good afternoon. Good afternoon to all. So, just want to add to what's been said. The automotive amongst few industries that is, very related in terms of quality and performance. We have stringent norms for vehicles to meet emissions, safety, performance, etc.
And like mentioned, fuel side also, there are very clear specifications. It's not only the OEMs who are producing these vehicles, which test them very elaborately, but also when you introduce a vehicle, these have to be tested, certified, homologated, and then introduced. And now, with newer norms, there is intermittent, again, certification by bringing some of the on-road vehicles back and testing them. So, but the point I'm trying to make is the vehicles that are made available to consumers are extremely well engineered, well designed, and have a very immense element of oversight and through very technically sound testing agencies which are independent. Now, the second point I'd like to briefly make is to set the context. Ethanol is a very good fuel. Its RON is much higher, therefore very good drivability. And it's nothing new. In fact, I was also surprised to know that initially in early 1900s, when the new automobiles started to run, it was ethanol that was used. And another fact is that, its performance is so good that it is used in Formula One racing cars. So the fuel itself is very good from a performance point of view, acceleration, RON element, but it's also clean fuel. In an era when we are facing the issue of climate change and are looking at rapidly decarbonizing, this is a zero carbon fuel because it's derived from plants. None of the carbon emitted by when you use this fuel is under the ground. It's all over the ground, which is recycled. That makes it extremely good for not only use now, but for our coming generations, because we are avoiding so much of carbon emissions, which has adverse impact on our society and the generations to come. Last point I'd like to make before I hand it over is just look what happened 2-3 months back. I think it was a wake-up call and an extremely strong reminder of the vulnerability we face because of energy being imported. We're not being energy self-reliant. And in this tough time when energy, not only the energy prices, the fossil fuel prices, but crude availability itself became an issue. So I think with 20% mixing being in place, a lot of that helped to mitigate the impact not only on the economy, but also on the pockets of the consumers. So with these points, I'd like to hand it back. Thank you. Thank you, Gulati ji. Now I'd request Mr. Rahul Bharti to make it. Thank you, and thanks for inviting me to this forum, where it gives me an opportunity for Maruti Suzuki to, utilize this opportunity to reach out to all customers in the country and give a statement of confidence. Over the previous few days, we've heard that there are some doubts or queries or concerns on usage of ethanol in cars. India mandated E20 from 2023 for material compliance, and before that it was E10. Obviously, after 2023, both the cars and the fuel are mandated for E20, so that is not a cause of concern. If I understand well, the cause of concern is what happens if on the cars that have been sold before 2023, manufactured and sold before 2023, if which was primarily designed for E10, what if E20 fuel is used on them? That's probably the central question which needs to be addressed. As Mr. Gulati said, the industry is very robust in design, testing, validation, certification, and even post-certification, checking conformity of production through the life of the model. And in that design methodology, let me mention to you that we have sufficient factors of safety that take care that there is no problem in terms of wear and tear, corrosion, or damage to the life of the car or the parts that come in contact with the E20 fuel
if E20 is used on cars that were produced and sold in India before 2023. As a manufacturer, we have tested E10 cars which were prevalent before 2023 on E20 fuel for all parameters, and we have not found anything of concern. That's a statement of confidence that I want to give you, and of course we are here to address questions also. Thank you. I would request Mr. Ashutosh Verma to make his remarks. Thank you, ma'am. First of all, let me start with congratulating the Government of India for the steps it has taken and continues to take for India's energy independence. Over the last few days, we've seen a lot of social media chatter regarding how damaging E20 possibly could be to the vehicles. We are here to dispel these concerns. As a responsible manufacturer and the world's largest two-wheeler maker, we sell over what part did you miss? I can start again. Hello, check 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is okay? Is okay? Just nearby. Okay, closer, closer. Is this better? Check, check. Can you hear me? One second. Is the problem in our audio box there? It's okay now? It's not okay. So which mic? We are using this mic. So if we are using this mic, you are getting it? Hello. Check, check, check. This is okay now? This much level? आशुतोष जी आप बोलिए. Can I? Can I? Can I go ahead? Okay, okay. What happened, Amit? Okay. Check, check, check. Podium and see. Just see the podium is working. Podium is. This is working. Okay. There'll be questions also. But Check, check, check. it's okay now, Check. I think. We are going with that mic. Check, check. तो एथेनॉल पर प्रेस वार्ता का प्रसारण आप देख रहे थे। आपको बता दें कि एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का जो प्रयास है वो 2013 से किया जा रहा था। इसकी शुरुआत 1.5% एथेनॉल के मिलाने से की गई थी। दरअसल कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश के तहत ये किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि दुनिया के कई सारे देशों में भी इस्तेमाल की जा रही है। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल जो मिलाने का
लक्ष्य रखा गया था जिसे नाम E20 दिया गया था। और यह भी बताया गया विशेषज्ञों द्वारा कि एथेनॉल मिलाने की जो प्रक्रिया है ये रातों रात ही पूरी नहीं की गई, ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत शुरू की गई प्रक्रिया थी, जिसका फायदा निश्चित रूप से भारत को होगा और हमारी जो निर्भरता है जो तेल देश हैं उन पर, वो निर्भरता हमारी कम होगी। तो ये एक तरह से पूरी तरीके से शोध किया गया और उसके बाद में विचार किया गया, उसके बाद में इसको लेकर के जब इसका इंप्लीमेंटेशन किया गया उसके बाद अब जो विशेषज्ञ हैं वो जानकारी दे रहे हैं। कोशिश ऐसी थी कि एथेनॉल को 20% तक पेट्रोल में मिलाया जा सके जिसका कि फायदा हमें हो सके। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो आप देख रहे थे नेशन टू नेशन, जिसमें आज हमने बात की कि कैसे फ्रांस सहित यूरोप के कई सारे देश गर्मी की मार से परेशान है। हीट वेव जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित कर रही है। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।